ballot to anyone under any circumstances will render the vote invalid. So the process is that after you have taken the ballot paper, you mark it in the compartment, fold it, and mark it with the pen, as I mentioned, which we have provided. Marking it by any other pen would also make it invalid. About the whips, it is also clarified that political parties cannot issue any whip to their MPs and MLAs in the matter of voting in the presidential election. There is no whip which is permissible in this election. As per Section 18 of the President and Vice President Election Act rules, the offence of bribery or undue influence in any manner, as defined in Section 171B and 171C of the IPC, by the returned candidate or any person with the consent of the returned candidate, are among the grounds on which the election can be held invalid by the Honorable Supreme Court in an election petition. So, there is no way that any influence or any inducement or any case of undue influence which must be totally avoided. Otherwise, it's a ground for petition. तो दोबारा से सारांश में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एमपीज और एमएलएस का कोई व्हिप इशू नहीं कर सकेंगे, और चूंकि ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्राइम की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन ग्राउंड्स पर इलेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द भी किया जा सकता है. Our COs in the states will supervise the arrangements and the election, as I mentioned earlier. Now we come to the COVID. Fortunately, it's not as an issue as it was, but still the Commission has decided to maintain every protocol as applicable in the respective states. The entire, on the day of polling and on the day of counting, the entire protocol would be followed. It has also been Commission's endeavor to make elections eco-friendly. This is our responsibility. And in view of the importance of this election and the fact that lawmakers constitute the Electoral College, and to reinforce criticality of environmental protection measures in policy and action, the Commission has directed the returning officers and assistant returning officers concerned to ensure use of eco-friendly and biodegradable material and eliminate the use of prohibited plastic material altogether. चुनावों को इको-फ्रेंडली बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल की बजाय टोटली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करने का निर्देश कमीशन ने सभी को दिया है. Coming to the counting of votes will be held in New Delhi under the supervision of the returning officer, who happens to be the Secretary General of the Rajya Sabha. And on completion of the counting, the return of election in form number 7, as appended in the rules, will be signed and issued by the returning officer. So I have already stated that this press note booklet is available also, and this is copies are kept outside, but this is also available if anybody wants from our office as well. There are number of questions which are raised about this election. So we have also prepared a frequently asked questions, FAQs. There are 35 questions which we are uploading immediately after this. So I am sure that replies to whatever is in your mind would be available here. But anyway, if you want to ask anything, now in the end, in pursuance of the subsection 1 of section 4 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, the Election Commission of India has fixed the schedule for the election to fill the office of the President of India as given in Appendix 3, and which I am reading out to you now. Can we put it on the... I was waiting for you to announce it, sir. So the notification would be on 15th June, that is Wednesday.
Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022, that happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. Thank you. We'll take your questions now. I'll again request you, पूछने के पहले कृपया अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन बोलें. हम सबका क्वेश्चन ले पाएंगे. कृपया जल्दी ना करें, एक एक करके पूछें, सबको सहूलियत होगी. I'll begin from first row then. हेलो सर, गुड इवनिंग. मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन से बोल रहा हूँ. आपने तारीखों का ऐलान कर दिया, पूरी सूची आपने जारी कर दी. सवाल लगातार निष्पक्षता को लेकर उठता रहा है. रिजॉर्ट जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है या हम दरबार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं. पिछले 8 वर्ष देश और प्रदेश के लिए अद्भुत बदलाव के वर्ष रहे हैं. सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभावों का स्वागत करने के लिए तथा इस आयोजन के विषय में विस्तार से प्रकाश डालने के लिए अब मैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं. श्री नंद गोपाल नंदी. आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय शक्तिशाली नेता, हम सबके अगुआ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए सतत समर्पित नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, विधान परिषद के सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र बहादुर सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी सहयोगी साथीगण, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, आए हुए सभी उद्यमियों, गणमान्य अतिथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. आज की इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उपस्थित उद्योग जगत की जानी मानी सभी हस्तियों का और सेरेमनी में शामिल प्रत्येक निवेशक का हम विशेष रूप से आभार करते हैं. आपकी प्रतिबद्धता और प्रयासों से आज का ये आयोजन सफल हुआ है. आपकी उपस्थिति हमारे मनोबल को बढ़ाने वाली है और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को
बदलने में आप May I start, sir? Yeah. Good afternoon. आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है. This press conference becomes a little more special as this is Shri Rajiv Kumar's first press conference after assuming charge as Chief Election Commissioner of India. हमारे समक्ष मंच पर आसीन हैं ऑनरेबल CEC श्री राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद्र पांडे जी, सेक्रेटरी जनरल श्री उमेश सिन्हा जी, द कंसर्न सीनियर DEC श्री धर्मेंद्र शर्मा जी, Senior DEC Shri Chandrabhushan Kumar and Shri Narendra Butolia, the concerned Senior Principal Secretary. I would now request Honorable CEC Shri Rajiv Kumar ji to make his opening statement. Thereafter, the floor would be open for your questions. Thank you. Sir, please. Thank you, Shefali ji. Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji, colleagues on the dais, friends from media, present here and connected to us virtually, and fellow citizens. I feel highly privileged and honored to announce before you the schedule of election for the office of the President of India, not only the highest elected office of the country, but of the largest democracy of the world. भारत के राष्ट्रपति का पद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर्वोच्च चयनित पद है और जिसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। मैं अपने सहयोगी निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी एवं संपूर्ण निर्वाचन आयोग के साथ भारत के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूं। It's a matter of great pride, privilege and honor that the institution of Election Commission of India has successfully, freely, fairly conducted elections 15 times to the office of the President. And this is the 16th time, and we really feel very privileged and honored. So the format of today's briefing would be something as it is on your screen. So what we'll do is we'll show you the overview, election procedure क्या है, election में कौन कौन भाग लेते हैं, वोट्स की उनके वैल्यू क्या है, नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शंस की लोकेशंस कहाँ होंगी, वोटिंग कहाँ कहाँ होगी और कंडक्ट एंड रूल्स क्या हैं उससे रिलेटेड, और उसमें कुछ हम लोग नए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करेंगे वो क्या है और लास्ट में शेड्यूल क्या है। The term of office of Shri Ramnath Kovind ji, Honorable President of India, is ending on 24th July 2022, as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing President is required to be completed before the expiration of the term, which in this case is 24th July 2022. Article 324 of the Constitution, read with the Presidential and Vice Presidential Election Act, copies of which are here outside. You can also take copies. And the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974 vests the superintendence, direction and control of the conduct of election to the office of the President of India in the Election Commission of India. And Commission therefore, as I said, is fully geared up to discharge and perform this duty in a very, very free and fair way. जो एक्ट मैंने अभी आपको दिखाया उसकी धारा 4(3) में निर्वाचन के लिए जो अधिसूचना है वह निर्गामी राष्ट्रपति जी की पदावधि समाप्त होने से पूर्व 60वें दिन 60th डे या उसके पश्चात जारी की जा सकती है और एग्जैक्टली इट इज वी आर फॉलोइंग दिस, इट इज आफ्टर 60th डे. As per Article 54 of the Constitution of India again, the President is elected by the members of the Electoral College consisting of elected members of both houses of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha.
and elected members of the legislative assemblies of all states, including National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Pondicherry. और यहाँ ये एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, they are not part of the electoral college and therefore they are not entitled to vote. Similarly, members of the legislative councils are also not electors for the president election. Article 55(3) of the Constitution provides that election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote, and voting at such election shall be by the secret ballot. In this system, the elector has to mark preferences against the names of the candidates. तो वो किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं? वो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में यानी 1, 2, 3 कर सकते हैं, रोमन रूप में कर सकते हैं, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज की जो रोमन जो 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 उसके शब्द हैं उनमें अंक हैं उनमें कर सकते हैं, और ये शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता है. Preference has to be marked in figures only and shall not be indicated in words. The elector also has to mark many preferences against the number of candidates. While marking of the first preference is compulsory for the ballot paper to be valid, और अगर किसी वोटर ने प्रथम चॉइस नहीं दी और बाकी चॉइस दी तो उसका वोट कैंसिल हो जाएगा. एक दूसरी विशेष बात है कि वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन प्रोवाइड करेगा. यह पेन पहले से ही एआरओस के पास रहेंगे और डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा मतदान केंद्र में वोटर्स को मत पत्र सौंपते समय दिए जाएंगे. सो दे हैव टू वोट ओनली बाय दैट पर्टिकुलर पेन. इफ किसी अन्य पेन का उन्होंने उपयोग किया तो मतगणना के समय उनका वोट इनवैलिड करार दे दिया जाएगा. The Election Commission, in consultation with the central government, appoints the ROs once from the Lok Sabha and second time from the Rajya Sabha. So this time, Secretary General Rajya Sabha will be appointed as the returning officer for the present election. The Commission has also decided to appoint assistant returning officers in all the state capitals, including NCT of Delhi and Union Territory of Pondicherry, and this is for making all the arrangements for conducting the poll and for transporting ballot boxes from Delhi to the state capitals, where the voting will take place at the designated places, and also to bring back those ballot boxes. If in case the AROs are not, for some reason, fall ill or something, the Commission has also appointed the second assistant returning officers and will be distributing you a book